अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहमद अली अकबर और 15 दिसंबर को मेरी फिल्म गुंजल आ रही है सिनेमाज में। प्लीज़ जाके देखिएगा, आप लोग एंजॉय करेंगे। और अभी हम बातचीत करेंगे आमना से, ना सिर्फ गुंजल की बल्कि और भी बहुत चीज़ों की। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। मेरे साथ आज एक ऐसे अदाकार हैं जो 10 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में एज ए प्रोफेशनल एक्टर। हाथ ही पहली दफ़ा चढ़े हैं आज। अहमद अली अकबर, वेलकम टू द शो। एंड देर आए और होपफुली आज लेकिन दुरुस्त आएंगे। बहुत सी बातें हैं आपके साथ करने वाली। 10 साल का आपका सफ़र है ऑलमोस्ट, है ना? लगभग राइट, टेलीविजन का। टेलीविजन का, बिल्कुल। Yeah. But thank you for having me. Thank you so much. Thank you for agreeing to it finally. I know that you're a kind of a recluse when it comes to media attention. और आपके प्रोफाइल में भी क्या लिखा हुआ है कि साइलेंस इज साल्वेशन। तो उस पर बात करेंगे कि साइलेंस में कौन सी साल्वेशन आपने ढूंढी। पहली दफा अहमद, आपको मुझे तो याद है आप छोटे से एक बच्चे थे जिन्होंने ग्रीस नाम के एक थिएटर प्ले में काम किया था। और उस वक्त देख के आई वाज लाइक ये शख्स है, इसकी शक्ल इतनी कैसे मिल सकती है जॉन ट्रेवोल्टा से। And for me, that was my first exposure to Ahmed Ali Akbar, the actor. And we're seeing you like doing some fantastic projects. Film आपकी आने वाली है जिसका नाम है गुंजल. A fantastic trailer. Looks like something really intense, really good casting. थोड़ी दर्द भरी है. आपके काफी सारे प्रोजेक्ट रिसेंट दर्द भरे ही रहे हैं. राइट, जिंदगी का बहुत फैक्ट है ये, दर्द है। हाँ, उस पे यही हमें बनाता है। दर्द बनाता है हमें। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा है, हमारे आजकल हालात भी ऐसे चल रहे हैं। मगर इफ आई आस्क यू टू इनकैप्सुलेट, लाइक टेक द क्रक्स ऑफ 10 years एज अ प्रोफेशनल टेलीविजन एक्टर, आप क्या कहेंगे अपनी जर्नी के बारे में भी और इंडस्ट्री के बारे में भी? ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कहाँ जा रही है? Alhamdulillah, my if I look back, it's been uphill, it's been very unpredictable. मुझे पता नहीं था क्या किस किस्म का प्रोजेक्ट आएगा, कब आएगा, क्या होगा। और यही एक्साइटमेंट आई थिंक इस प्रोफेशन की, इस करियर की, कि आई डोंट नो व्हाट्स अराउंड द कॉर्नर। इट्स बिन ग्रेट, इट्स बिन अपहिल सो फार। मैं तो ये कहता था कि मेरा जो पीक है वो 60 साल की उम्र में आए ताकि सारा करियर अपहिल हो। बट परिजात जैसी चीज आ गई, इतनी मुझे इज्जत मिली है, लोगों से इतना प्यार मिला है, एंड आई होप इसी तरह अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहे। But it's been a great ride, and I'm still enjoying it, still riding the flow. You are. Yeah. Ahmed, are you an ambitious person? Not really, not very ambitious. मैं consistent भी नहीं हूँ। एक चीज पकड़ता हूँ, अच्छी करता हूँ, समझ लेता हूँ, उससे सीख लेता हूँ, I make it part of my personality. I move on, I try to do something else. तो इस तरह की inconsistency personality है। So उसमें ambition अभी तक नहीं किसी चीज पे जुड़ा, किसी चीज के साथ ऐसा नहीं जुड़ा। नहीं क्योंकि मैं आपका ट्रेजेक्टरी देखती हूँ काम का, और यूजुअली जब नए एक्टर्स आते हैं इस फील्ड में तो उनके अंदर एक बेचैनी होती है कि हमने ज़्यादा काम करना है, या ये काम भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी कर लें, हर वक्त हम नजर आए। आप में मैंने वो बेचैनी नहीं देखी। आप एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट करते हैं अमूमन, और वो कोई बड़ा संजीदा प्रोजेक्ट होता है। शुरू में आपने किए ऐसे प्रोजेक्ट जो थोड़े फॉरगेटेबल थे, लेकिन कोई ऐसा फ्लिपेंट नहीं होता कि जी बाय द वे अहमद ने ये कर लिया। अब आपके नाम के साथ ये मयार जुड़ चुका है कि अगर अहमद अली अकबर ने हाँ की किसी प्रोजेक्ट को, तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ मेरिट होगा। तो ये वाज इट अ स्ट्रेटजी दैट यू डेवलप्ड विद टाइम? Not at all. It might change completely. हो सकता है कल मैं कोई ऐसी चीज करूं जो बिल्कुल मेरे लिए भी सरप्राइज हो। करना ना यार। बिल्कुल, नो, आई एम ओपन टू इट। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। बिल्कुल ये ट्रैजेक्टरी मैंने खुद चूज नहीं की। लाइक आई सेड, द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट दिस प्रोफेशन इज के आप श्योर अपना इमेज पे काम कर सकते हैं और एवरीथिंग, बट क्या काम आपकी तरफ आएगा, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ दैट। किसके साथ काम मिलेगा, नॉट इन कंट्रोल ऑफ दैट, unless you become a producer actor. So I'm riding the wave.
किस comedy आए, I would love to do Yeah. comedy. I think I'm actually okay at comedy. I think so too. Yeah, I yeah, think so too. and romance जाए, and I really want to do some एक कोई action pack कोई काम आए तो I'm open to everything Yeah, and but anything. Lal Kabootar, they Yeah. were action. Yeah, right? There was and reality काफी based. उसका action choreography मैंने help की थी उसमें, because जब जिन दिनों मेरी shoot नहीं थी, I was not shooting any scenes. I was the AD just because I wanted to be on set Right. and learn the process. Right. And उसमें कई जगह ऐसी थी जहाँ action sequences थे जहाँ I had to jump in because मुझे लग रहा था कि नई बात बन रही, and I had to sort of choreograph and teach some of the actors, the extras. So yeah, I like to learn. I like to Right. challenge myself. Right. So it was So fun. Ahmed, script तो आपके पास बहुत आते होंगे, जी. फिल्म के भी और टेलीविजन की भी. Obviously, I mean, फिल्म की बात करें तो पर्ची was very successful, and Lal Kabootar, of course, was Yeah. our official Oscar submission. जी. And बड़ी acclaimed film, बहुत अच्छी फिल्म थी. और ड्रामों की बात जब हो तो आपके ड्रामे भी बड़े सक्सेसफुल पिछले 3 साल में तो खास तौर पे. I think Parizad was the peak. Yeah. But उसके बाद स्क्रिप्ट तो आपके पास कितने अमूमन मतलब महीने में आ ही रहे होते हैं ना, नए ऐसे जैसे बिल्कुल बिल्कुल रोज नाश्ते के साथ एक अहमद के बाद नया स्क्रिप्ट आज पढ़ने के लिए. So how are you choosing your scripts now? प्रोसेस है एक तो किस तरह, क्योंकि बहुत लंबी स्क्रिप्ट्स होती हैं. मैं वही तरीका है, you hear the summary, you hear what the story is about, and क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा आती है, कभी कभी गैप्स आ जाते हैं. It depends इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है. अक्सर ऐसा होता है साल के तीसरे महीने सारे काम कर रहे होते हैं तो एकदम से बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं. फिर एक थोड़ा सा दरम्यान में गैप आता है जब सारी प्रोडक्शन में होती हैं, तो सारे अब मसरूफ होते हैं, so no new scripts. I just try to hear एक brief सुनता हूँ, and then अच्छी लगती है I read my character, और अच्छा लगता है I read the whole thing, so I try to एक process है go step by step. Yeah, step by step. So what makes you decide that script अच्छी है? If I feel, if it's a page turner, if I feel something, कुछ महसूस हो रहा है, तो मुझे पता है कि ये जब स्क्रीन पे ट्रांसलेट होगा कुछ ना कुछ निकल आएगा इसका. Does it matter कि टीम कौन है, डायरेक्टर कौन है, co-stars कौन है? Yeah, not really. Not really, but sometimes yeah, films में मैटर करता है. जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें बहुत नए लोग हैं, बहुत लोग AD से डायरेक्टर बन रहे होते हैं, and I have met some amazing ADs जो who are totally capable of making 26 episode 30 episode dramas. So I'm और मुझे नए लोगों के साथ काम करने का बहुत मजा आता है. So टीम इतना नहीं मैटर करती. अगर वो कागज पे अच्छा है ना तो आपका 50% काम हो चुका है. Pre-production का ही Yeah, I mean it's even before pre. If you feel something when you're reading it, then you've got 50% of your work done. Right. So the rest of the 50% is execution. Right. So because essence सब कुछ ही रूह जो है वो स्क्रिप्ट है. And script में अगर महसूस हो गया कुछ तो then I say yes to it. So let's work backwards now. Gunjal आने वाला फिल्म आने वाली है. I think 15th December is the release date, and it's of course based on inspired by true events. जी. And it's a story of इकबाल मसीह की कहानी है, 90s की setting है. तो इसमें of course, I won't even ask why did you say yes to it, because it looks like a really good, intense project. But what is there to look forward in it? Because it also seems like it's a very depressing subject. It is. It is a depressing subject. Yeah, it's a very relevant subject. It is a very relevant subject. It's my way of being an activist. You know, मेरा अपने art के through मैं चाहता हूँ अच्छी कहानियाँ भी सुनाऊँ. Not always, but sometimes. और अगर ऐसी opportunity आए तो अच्छी स्क्रिप्ट है तो माशाल्लाह से आपने इडियट में भी काफी अच्छी बातें बताई हैं लोगों को. उस पे अभी आएंगे अभी या उस पे अभी आते हैं. But yeah, Gunjal, so of course it's very relevant. Yeah, it's very relevant when you talk about abusive child labor and you know and a lot of children in general these days. You know, we talk about Palestine and बच्चों की बात ही हो रही है ना. How many kids are dying? How many children and babies are dying? It's so unfortunate. Dark times we're living. Very dark times. जितना हम जितनी दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, जितनी हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, उतना ही मुझे लगता है हमारी बार्बरिज्म जो है वो भी एक्सपोज हो रही है. हमारी डीप रूटेड जो इनह्यूमेन जो हमारा एस्पेक्ट है हमारी नेचर का, वो निकल के सामने आ रहा है.
Gunjal talks about a lot of things Okay. through the eyes of these two characters. Hmm. Irfan Masih, who's inspired by Iqbal Masih, जी. and Shahbaz Bhatti, who's just a regular journalist जिसका Crime सिर्फ काम है. reporter. Crime reporter. Crime reporter, Yeah. बिल्कुल. बड़ा अच्छा वैसे, I liked it. I like it too. Yeah, crime reporter. Yeah. And investigative journalism की जो films हैं वो वैसे ही बड़ी मजेदार होती हैं. You know, and so it's the story of both these characters through each other's eyes. Right. You know, हम दोनों की नजर से, एक की नजर से आप दूसरे की जिंदगी को देख रहे हैं, उसकी नजर से आप उसकी जिंदगी को unravel कर रहे हैं. It's got a great cast and some of It these. does, absolutely. Yeah. So is it not him investigating the murder of? He's out to write a story. Write a story, right. And through that, in us journey mein, he sort of starts to unravel things that are not, that were hidden, that weren't exposed. And there's a lot of confusion. You know, uska perspective rapidly change ho raha hai on what really happened. So it's sort of an insight into Irfan Masih, jo character Iqbal Masih se inspired hai, into his life, his activism, right. and the events surrounding his death. And wo change hota jata hai over time, and there's more confusion and there are more questions that, जैसे किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आप एक चीज जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही पता चलता है, उतना ही सवाल भी उठते हैं. So और उसके साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है. इट्स अ स्टोरी सेट इन 14 days. राइट. एंड इस 14 days में मेरा ख्याल है इस बंदे की, शहबाज भट्टी के जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, इसकी जिंदगी की सबसे सिग्निफिकेंट डेज में, क्योंकि इसकी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत मेजर चेंज आता है. And through this story, through this investigation, his eyes open to these causes, this issue that's so prevalent and around us, but we sort of don't see it, or we choose not to see it. And so it's a journey of both these characters, right. And it's really powerful. It's Resham ko ek bilkul naya avatar mein dekhenge. She's done a phenomenal job. Oh, she's very good. Yeah, and she was such a good sport on set. You know, it's a not big budget film, and हमें बड़ी ऐसी circumstances में काम करना पड़ता है जहाँ मुश्किल होता है. And she was a great sport. You know, वो वाले नखरे नहीं जो हमने सुने होते हैं. Yeah. It's obviously थोड़ा मसले मसाइल होते हैं, but she was great. Ahmed Ali Akbar, we see also see him in a very different new avatar, new look. He's a hero of mine. I grew up performing for his opening for his band, क्योंकि मेरा भी एक band था. Right. So I grew up listening to, looking up to these guys and listening to their album on repeat. I've always wanted to work with him, and अच्छे project में chance मिला. बिल्कुल. अच्छे intense scenes में हमने share किए हैं. So बहुत मजा आया. And then these new kids, Arham and Muhammad Ali, great. They were really, really good. Right. Fun to work with. Right. So child actors भी हैं, and मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारे mediums में बच्चे नहीं. There's no kid actors. There are very few. And मैंने खुद भी बचपन में काम किया, so काफी चीजें missing हैं. I was very happy कि इसमें. I have to say you're late to the party. You're late to the party. अब बच्चे भी बहुत हैं टीवी पे. अब हैं वैसे. अब अंडर एज बच्चों के अफेयर्स भी हैं. राइट. शादियां भी हैं. अब मैंने जी बिल्कुल ऐसा नहीं. अब तो बच्चे are kind of ruling the screen these days. Yeah. बिल्कुल. But yeah, you're right when it comes to serious roles. Yeah. So कम हैं. बिल्कुल. Films में भी especially कम हैं. Would you say that Gunjal जैसी फिल्म जो है, it would have been better received as a drama on television, जहाँ ज्यादा लोग उसको देखते और उनको टिकट लेके ना जाके देखना पड़ता है? बिकॉज वुड यू अग्री विद द फैक्ट कि जब लोग टिकट लेके फिल्म देखते हैं तो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको गाना चाहिए, उनको एक्शन चाहिए, उनको थोड़ी सी रोमांस, थोड़ा सिजल फड़क वगैरह चाहिए, एंड दे नीड टू बी for the lack of a better word, titillated into, being excited to be in the cinema. और इतना serious subject देखने के लिए it's going to be challenging. बिल्कुल. I mean, एक serious subject भी entertaining हो सकता है, बताएं कैसे? Yeah, that's interesting. And of course it can, but how do you think?
I mean, Mission Impossible सारी सीरियस होती हैं, बस Really? में एक्शन होता अच्छा, है. okay, अहमद. But I बहुत mean, serious. बिल्कुल बिल्कुल. but what I mean, जरूरी है, entertainment बहुत जरूरी है. हाँ. वो किसी भी तरीके से आ सकता है. वो एक engaging story से भी आ सकता है, वो एक engaging character arc से भी आ सकता है. वो एक्शन से भी आ सकता है, वो एक आइटम नंबर से भी आ सकता है. बिल्कुल. So हमारी आवाम they want an escape. They want a sort of अब तो खैर even West maybe they want a fantastical element to a film. पहले नहीं था. पहले Godfather जैसी फिल्म देखने चले जाते थे. बड़ा. But I agree to a certain extent. People, especially depends आप किस आवाम को दिखा रहे हैं. राजेश खन्ना से पूछा था कि आप ये जो खेतों में आपकी हीरोइन भाग रही है और आप एक ऐसी स्माइल कर रहे हैं जो कोई नहीं करता असल में, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ इस रीजन में लोग एक बहुत ट्रबल लाइफ ज्यादातर गुजार रहे हैं. दे वांट टू एस्केप, दे वांट टू see something that's grand, that's beautiful, that's nothing like their own life, because they don't want to see their own life. They want a Rocky or Rani ki prem kahani. Yeah, and that's fine. That's perfectly fine. Having said that, I think all kinds of movies should come on screen, and I think television में भी हम दोनों में हमें लगता है कि एक certain किस्म की फिल्म ही बड़ी स्क्रीन पे चलेगी, एक certain किस्म का ड्रामा टीवी पे चलेगा. I think कुछ प्रोजेक्ट्स ने in the recent past ये ब्रेक किया, especially टीवी में. And film में I think there's a lot of learning to do. I think we're still kind of figuring out our audience, और हम उनको पूरी तरह नहीं समझ पाए. And there's some way to go. You're on the Pakistan Academy Selection Committee this year, so you must be watching a lot of films. Although I think इस साल की तो इतनी होंगी नहीं submissions, है ना? 4 or 5 films. 4 or 5, yeah. And In Flames was, I think, the official selection this year. Were you part of that process? जी बिल्कुल. You were. बिल्कुल. So, what is the reason that a Legend of Malajat doesn't make it, but a film like In Flames does? I think एक तो was Malajat the same year. I don't know if it was in the same year. I think it was last year. I think it was same year. I think so. Maybe. Okay. Even if it's not, it didn't make it last year either. Yeah. So why would you say? I think if you look at ये उसी तरह है कि Marvel की कोई फिल्म नहीं Oscars वाले उठाते हैं because they want something more real. Yeah, more real. I don't know. More. It's deeper, I guess, for lack of a better word. Right. Has to have something, some substance, some message. Not that some of these Marvel films don't. कुछ एक दो शायद दरमियान में आती हों जो जिनमें कुछ scenes हों that are, you know. Yeah. But I think Oscars का अपना एक हमने देखा है पूरा trajectory देखी है फिल्मों की है वो किस तरह choose करते हैं. So I would want to see big budget action films. We need to see more films. Like Lord of the Rings. I remember when Lord of the Rings won 11 Oscars. Because I'm a huge fan of Lord of the Rings. Right. बहुत खुश था. सारे technical थे. Right. तो इससे भी पता चल जाता है ना कि वो सारे technical जीता है वो script में नहीं या story में नहीं या वो character जिससे आप इतने deeply relate करते हैं शायद उस तरीके से नहीं थी वो film. So इधर भी शायद ऐसा ही है. Malajat is flashy, big, very impressive in terms of सारी technicalities, but maybe शायद character से उस तरह आप relate नहीं कर पाए. Right. It's really far from reality. It's really far from who we are. Maybe शायद इसलिए. Right. So maybe I guess that's the reason. Right. Would you say that you're selecting characters that kind of portray the underdog of society? Because Gunjal में भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि एक इंसान है जो थोड़ा सा he's struggling with finding his voice, as a crime reporter. Idiot में भी जो गुलजार है वो बेचारा बचपन से जवानी तक struggle कर रहा है for people to understand who he is. And I would also like you to clarify. बहुत लोगों ने कहा कि जी गुलजार जो है he's autistic, लेकिन लोग समझ नहीं पाए उसको. So अब थोड़ी रोशनी उस पर डाली कि क्या गुलजार autistic था लिखा हुआ. And then of course Parizad में परिजाद जो है वो बिल्कुल एक ठुकराया हुआ किरदार, राइट, रिजेक्टेड बाय सोसाइटी. वो
So are these conscious decisions or are you just getting those scripts के भी ये मुश्किल रोल है, ये अहमद को दे दो, ये कर लेगा? So I think a bit of both. Both. बिल्कुल ऐसा है कि लोग and तो परिजाद से शुरू करते हैं. हाँ हाँ जरूर. परिजाद definitely when I so परिजाद की कहानी कुछ ऐसी थी कि मैंने दो एपिसोड्स पढ़ी. मैंने 2 एपिसोड्स पढ़ी and मैंने कहा ये 2020 में आप मुझे क्या दे मतलब it doesn't I don't why are you even offering this to me? It does not look like me. I don't know what क्या they था? were What thinking. was the description of the character? उसके चेचक के दाग हैं, Right. dark skin है, and it तो बस मैंने इतना सा ही थोड़ा सा पढ़ा. उसकी birth का scene होता है. I was like, okay, I don't know. You should give it to somebody who. Is this how you see me? Yeah. Or I mean, like, give it to somebody who looks the part. Yeah. And I said no. 6 to 7 months later, Zahid, the AD, a good friend of mine, and Salman, my manager, really good friend of mine, said, you always wait for a good script, and this is one of those scripts. Just give it a read. पढ़ तो लो पूरी तरह. I was like, okay, मैं पढ़ता हूँ. मैं अपने कमरे में अपने टीवी पे स्क्रिप्ट अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके ना बड़ी बड़ी नजर आ रही होती है मुझे. एंड मैं उस तरह पढ़ता हूँ, वॉकिंग, पेसिंग. एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम I shed a tear when I read the script. Yeah. At what point? It was after the 15th episode when he comes out of the prison. तो जेल से निकलता है, that's when he starts to express. उससे पहले दबा हुआ बंदा है, बोलता नहीं है. और जब मैंने पहले 15 पढ़े तो मुझे उसमें क्योंकि वो बोल नहीं रहा तो I didn't really understand who he is. जब मैंने अगले 10-15 पढ़े, it started to become clear. And I figured out कि इसकी वजह से I know how to play the first 15. Right. And I was like, this guy there are a lot of things that are similar to me. His philosophy on life, outlook on the world. Okay, I am interested, but how do we do this? This look part, this get-up part. मैंने उनसे बात की. मैंने 3 एक्टर्स सजेस्ट किए कि इनसे करवाएं. मैंने 3 एक्टर्स और like these guys इनमें से 2 थिएटर के थे जिनको मौका नहीं मिला था उस वक्त तक. अब they're on TV. आप नाम नहीं लेंगे इसलिए मैं पूछूंगी नहीं. हाँ नहीं. But phenomenal theater actors. I was like ये इन लोगों से करवाएं. Surround them with the big actors. And you will have something nobody's ever done for TV. You will change TV. But I think for understandable reasons, protagonists, you have to sell the drama. And फिर मैंने पूछा, okay, if not these guys, कौन? तो जो बाकी नाम बताए वो different, उसी तरह मेरी तरह different गोरे चिट्टे लड़के थे. Like I'll take the risk, I'll do it. अब मुझे बताएं कि चेचक के दाग का क्या करना है. कैसे करेंगे? But क्योंकि मुश्किल काम है. और ये इंटरेस्टिंग है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बिकॉज उस वक्त बहुत लोगों ने ये ऑब्जेक्शन रेज की थी कि व्हाई टेक अ गोरा लड़का एंड मेक हिम डार्क, व्हाई नॉट टेक अ डार्कर एक्टर. सो आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इट अप कि आपने सजेस्ट किया था. बिल्कुल. एंड फिर ये हुआ कि मेकअप टेस्ट किए. वो दाग बनाना अंडरस्टैंडेबली टीवी के लिए बहुत मुश्किल है. आपका मेकअप का बजट इतना ऊपर चला जाएगा कि आप बहुत मुश्किल था. So मैंने विटिलिगो सजेस्ट किया. विटिलाइगो होता है. एंड मैंने वो उसके भी मेकअप टेस्ट, आई हैव पिक्चर्स. मैंने कहा दिस हैज टू बी समथिंग जो वो कैरेक्टर बिकॉज वो हमेशा कहता है एक नजर, एंड he notices people seeing him. And I read the whole thing again. And I realized his issues have to be internalized. Right. It's not external. Because मैं सिर्फ डार्क स्किन होने पे एक बंदे की खूबसूरती की नहीं करूँगा. Exactly. The other characters were dark skin. तो मैं उस पे नहीं करूँगा. I will internalize his issues. Right. सारी चीजें मैंने वो दोबारा पढ़ा कि कुछ conflict या contradiction तो नहीं हो जाएगी. नहीं हुई. I was like, I have to change a lot about him. It is all because of society. सारा उसकी सोर्स और सोसाइटी तो करती है विक्टिमाइज. सोर्स बाहर से है लेकिन उसका मसला अंदर पकता गया. एंड इसलिए वो इतना टिमिड
लो सेल्फ एस्टीम इंसान दिल भी बना। टूटा उसका, हाँ, ये तो- धुतकारा भी गया हाँ, वो उसको। तो स्टोरी में हुआ, स्टोरी से हाँ, पहले पहले। तक वो वहां तक जो पहुंचा है वो जो वैसा है, आई हैड टू बिल्ड दैट, एंड देन दैट इज व्हाई he was the way he was. In script में थोड़ा सा फर्क था, you know, so I had to internalize all of his issues, and that was the challenge, and I loved Right. playing it. कोई ऐसे practice नहीं की मैंने उसकी मैं किसी पूछने चीज लगी की। थी कि what was the method of adapting to that character? आपका Just- generally क्या होता है? Do you look for people in society like that? वो कहीं ना कहीं क्योंकि I was always an observant kid, तो लेता हूँ मैं information हर जगह से, लोगों को observe करता हूँ, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आया है और कहीं रहा है, but mainly it was internalizing his who he is, Right. to understanding who he is deep down inside. He's an artist, he's sensitive, He's a poet. because he's a poet, you know, he loves music, he loves the piano, I love the piano, and मैंने कितने से piano पे सीखा था, a lot of similarities, and he's sensitive, he has trouble expressing so many things that were, you know, parallel to my own personality, and yeah, so मैंने कोई practice नहीं की, just read it. The answers are between the lines. Hashim Nadeem had written a phenomenal script. Yeah. Beautiful character. इतना अच्छा carve हुआ था. सारी उसकी philosophy on life, सारी उसकी ideology, सब कुछ अंदर थी उसमें. I just had to internalize. I had to go back to, जब भी कोई सवाल मेरे अपने ज़हन में उठता था, who he is, उसका कहीं ना कहीं script में जवाब था. And I had to recall it. I was like, this is the guy. This is what he thinks. He's plain, simple, straightforward. He just had trouble being who he is, accepting who he is, and which he did up until the last moment. And I love that about the character. Self-discovery पे निकला था, and उसके साथ-साथ उसको circumstances क्या कुछ दे देती है. Ending change की. And Hashim Nadeem Saab is amazing. You know, what a guy. We all sat together क्योंकि थोड़ा सा changes थे from the original, and हमने फिर decide किया, मैं Zahid AD, Shahzad Bhai, the director, Hashim Nadeem, we would sit while the shoot was going on कि क्या करना चाहिए, and सबने अपना अपना view बताया, and I was like, okay, so the character that I've sort of built, I feel like the only thing that's truly his is Urdu. Nothing else. The money, everything else is extra. वो तो आके गिर गया उसके. जो उसका अपना है वो है उर्दू. And he would go back क्योंकि वो एक किसी को मरवाने लगा था. और वही बंदा बनने लगा था जो उसको खुद नहीं पसंद. And he had to step back and he had to rethink who he is, because वो परिजाद से दूर होता जा रहा था. The innocence of Parizad. So he had to step away from all the shohrat, the money, and try to find himself again. Right. And the only thing he could give back is Urdu. So I saw him somewhere far teaching Urdu. And so उस तरह उनको भी अच्छा लगा आइडिया, and उनके भी इस तरह के सिमिलर आइडियाज थे, and सब मिल मिला के बड़ा अच्छा बन गया. बहुत अच्छा. Yeah, it was very fulfilling to watch. Yeah. It was, and you know, ended on a happy note. Yeah. बहुत अच्छा था. और पहली दफा बहुत देर बाद एक ऐसा ड्रामा देखा जिसमें of course फैमिली ड्रामा नहीं था बिल्कुल भी. एक इंसान की पैसेज टू सेल्फ डिस्कवरी, और वो भी एक बंदे की कहानी. Usually most of our dramas revolve around women and female characters, मगर एक बंदे की कहानी, तो बहुत अच्छा लिखा गया. मुझे although of course similarities किरदार में तो बिल्कुल नहीं होंगी, but appearance को लेके I feel that even शहबाज भट्टी डार्क किया गया आपको जरा सा, उसके लिए भी how has that character been fashioned? बहुत बहुत हल्का सा. It's sort of a tan जो सूरज में आप बहुत काम करें तो हल्का सा मामूली सा. तो बहुत it's as if he's working outside non-stop. You know, he's because you know with the type of mustache you have and the slight tan, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यार ये साफी कहीं देखा हुआ है. I feel that I've seen this character in real life. So I want to play the story of a common man. Right. You know, I want to represent the common man. Absolutely. And हमारे बहुत से परिजाद हैं बाहर. आपके सामने से गुजर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता. And but if you stop and talk to them, they've got a story, they've got ambitions, they've got dreams, they've got talent somewhere. So I want to talk to that guy. I want to know who he is. I want to tell his story. So इसीलिए वो जो आपने पूछा कि एक
अंडरडॉग की कहानी है. Most of our people, और our majority is a हाँ struggling class, and I ऐसा want ही to है talk about ऐसा ही them. है. आप ये किरदार ना कर पाते अहमद अगर आप 2 3 4 ड्रामे एक साथ कर रहे होते. तो बिल्कुल. ये भी कॉन्शियस डिसीजन है आपका कि एक वक्त पे शूट कितना 40 45 डेज का शूट होता है. एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट करते हैं या साल, परिजात साल. को साल लगा. परिजात तो खैर एक एक्सेप्शन थी. मेरा It was a हर very tough shoot it was a tough shoot. I because can, outdoor थी, so many different yeah, characters, yeah, and I also want to add कि even though it's Parizad's story, it's through his eyes is the story of हमारे माशरे की कहानी है. of course, हमारे लोगों की कहानी of है. course. तो और डिफरेंट फेजेस में जिसमें वो जाता है, Hmm. वो माशरे को ऑब्जर्व करता है और आपको पता चलता है लोग कैसे इस तरह के एक Hmm. इंसान को, प्योर इंसान को कैसे डील करते हैं, कैसे. Hmm. सो बड़ा अच्छा था. I mean, it was I mean, the writing is very classic that way. And, very you very. see short stories of Tom Sawyer, for example. वो वाली कहानियां जिसमें एक बच्चा है उसके थ्रू आप देख रहे हैं. बिल्कुल वर्ल्ड life. बिल्डिंग नजर आ रही है Yeah, आपको, absolutely. एक्सपोजिशन ऑफ अदर पीपल, so बिल्कुल many different characters in बिल्कुल. Parizad, इतने डिफरेंट लोगों की Yeah. कहानी और आपको I मिलती है. felt that Idiot also aspired to do the same. कि इस एक बच्चे के थ्रू आप जिंदगी के जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं उनको जी. देखेंगे and you learn about life through this child. But do you think it panned out the way that it was expected to? I think बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था. I was sold बहुत by अच्छा the कॉन्सेप्ट था. concept. बिल्कुल मुझे उस बिल्कुल. वक्त पूरी तरह स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई थी Yeah. जब मैं आया था. बेहतरीन कॉन्सेप्ट था. I was sold, but I think exactly वैसा नहीं निकल सका जैसा हम चाहते थे. Having said that, I think kids love it. Yeah, well, a lot of kids that could are, be acid/buddy it की is, वजह it से. is. और एक और मैं इंसेंटिव करने का I wanted to work with an बिल्कुल. animal, and Yeah, absolutely. वो कुत्ता he grew up on set. वो सेट पे ही Oh, बड़ा that was हुआ the है. same dog. I thought कि हाँ, शायद same body dog, double same एक dog. जैसे दो. कुछ scheduling की कुछ चीजों की complications हुई थी जिसकी वजह से वो 8-6 महीने बाद, तो वो इतना comfortable था सेट पे, इतना वो such a good sport. Such a उसको प्यारा जहाँ कुत्ता था. beautiful dog, Beautiful dog. इतना smart dog है. बहुत अच्छा किया उसने. and उसके साथ काम करने का बहुत मजा आया. बहुत मजेदार था. No, absolutely. That was one reason. That was जब ट्रेलर आया और उसमें आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत सा कुत्ता है तो आप कहते हैं something new about the story. बिल्कुल. But I did feel that it was maybe aspiring to be a Parizad part 2, but उस तरह वो नहीं डिलीवर कर पाया जितना था. उससे पहले there was एहदे वफा. जी. And that was a good project. Yeah, वो भी देख के बड़ा अच्छा था, and your character was really important and Very also important. well delivered. उससे पहले जो याद आता है ये रहा दिल. एक वो ड्रामा था जो आप कहेंगे कि भी टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा जो होता है ना, दो फैमिलीज की कहानी, बीच में लड़का लड़की और उनका रोमांस. एक लड़का दो लड़के. हाँ ठीक है, मल्टीपल ट्रायंगल्स वगैरह तो होते ही हैं, चलते ही हैं, लेकिन वहां से जो आपकी एक लोगों ने पसंद किया कि जी ओहो अहमद अली अकबर और यमुना जैदी, इनकी जो ऑन स्क्रीन पेयरिंग, आपको अवार्ड्स भी मिले उस पेयरिंग पे. जी, और वो फिर उसकी झलक परिजाद में जब आई तो लोगों ने कहा बस यही है, दिस इज इट. आपको पता ना, वो हम सफर पे ले जाते हैं कि बस वो फवाद और माहिरा और फिर अहमद और यमुना और शाहरुख और काजोल. एब्सोल्युटली. और अभी मैं आपके इंस्टाग्राम पर देख रही थी, कोई भी आप तस्वीर लगाएं, I think you're doing a small endorsement for something for a biscuit brand. और लोगों ने कहा प्लीज बिस्किट खाना बंद करें, यमुना से शादी कर ले. So it's everywhere. Yeah. So you're obviously very good at romance as well. And although there is a definite element of romance in Parizad and also an idiot, and I don't know about Gunjal, उसमें romance का है स्कोप ये है कि नहीं. It's romance with profession. वो और किस्म का लड़का लड़की वाला रोमांस नहीं है. But we've not really seen you after that one drama doing the quintessential romantic hero. तो उसकी क्या वजह है? मत कर तो आप अच्छा देते हैं वैसे. मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी एक लड़का लड़की की केमिस्ट्री हो. बहुत वो क्या होता है अच्छी? बहुत कंटेम्पररी हो, बहुत रियल हो. नहीं आ रही ऐसी कोई भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया जो मुझे फील हुआ. I'm waiting for it. मैं करना चाहता हूँ. I really want to do a romantic drama with Yumna. So for the fans, I'm waiting for that right script कि Yumna और मैं और वो भी कहती है कि कहाँ. Are you friends with Yumna? Very good friends with her. वो भी उससे भी जब बात होती है कहती है मैं वेट कर रही हूँ उस स्क्रिप्ट का जिसमें हम दोनों साथ काम करें और वो अच्छी स्क्रिप्ट हो और सिर्फ शुरू अच्छा ना उसको बिल्कुल पूरा कंप्लीट अच्छी हुई हो. तो we're waiting for it. Let's see.
I'm And how praying. amazing was she in Parizad? I She's mean, amazing. she was She's amazing, amazing. absolutely. Whatever she does, Yeah. उसको मतलब लेकिन यार एक आखिरी सीन था, हम देखते हुए हमने कहा यार आप लोगों ने हाथ भी नहीं पकड़ा, ये क्या, why? ये खूबसूरत बात नहीं है कि नहीं नहीं, कुछ तो दिया होता पब्लिक को, क्या हो गया यार? I think it was a new take on a relationship. I think it was the beginning एक of their दफा एक relationship. तरफ कह रहे हैं कंटेम्प्रेरी होना चाहिए, एक दफा कह रहे हैं कि नहीं ये ओल्ड फैशन, यही ठीक है, हाथ भी नहीं ना पकड़ो. मेरा ख्याल है that moment was the beginning of their relationship. Right. I think और उसमें सबसे खूबसूरत चीज जो थी वो ये थी कि वो कहती है I think I know who you are. You have to understand who you are. I'll help you with that. You have your own space. You know, you're a complicated person. Yeah. But I like it. Yeah. And I'll help you with that. And you're complicated and so am I. हाँ, That's what बिल्कुल, she's saying. बिल्कुल, So am I. बिल्कुल. You know, And in my own way. her past that Absolutely. she just अपना अभी उसकी नजर वापस And she has her own baggage. बिल्कुल. Very well handled. Yeah. And so he परिजात को एक mature खातून उस तरह की चाहिए क्योंकि उसमें एक innocence of a child है. तो आई थिंक वो यिन यांग बड़ा अच्छा था. बहुत अच्छा था. एंड उनकी शुरुआत थी मेरे ज़हन में. फॉर मी इट वाज द बिगिनिंग. जहां एंड हुई है वहां होप आई है. ऑफ कोर्स परिजाद और एनी की जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है. एब्सोल्युटली. दिस इज अ क्वेश्चन आई आस्क अ लॉट ऑफ पीपल और बहुत से लोग एक जैसा जवाब देते हैं. मुझे उम्मीद है कि आप हट के देंगे. व्हाट मेक्स एन एक्टर एंड एक्ट्रेस वर्क? केमिस्ट्री किस चीज से बनती है ऑन स्क्रीन? मैं नहीं मानती इस चीज को कि जी अगर लिखा हुआ अच्छा हो और डायरेक्शन अच्छी हो तो केमिस्ट्री बन जाती है. नहीं मेरा नहीं ख्याल. ये बियॉन्ड है. ये एक ऐसी चीज है दैट इज थ्री डायमेंशनल. इट इज स्क्रिप्ट से निकल के ऐसा जवाब ना देना किसी को समझ ही ना आए. हाँ ठीक है. कोशिश करना है मत लेमैन कॉमन मैन के लिए जरा जवाब दो. एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. कभी कभी आपको लग रहा होता है आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, वो नहीं आ रही होती स्क्रीन पे अच्छी. कभी कभी आपको लगता है कि कोई केमिस्ट्री नहीं है बट स्क्रीन पे वो आ रही होती है. तो ये मेरे लिए भी बड़ा अभी एक मैं भी नहीं समझ पा रहा कि क्या चीज है वो कि जो आई थिंक इट्स जस्ट सिंसेरिटी. थोड़ी सी सिंसेरिटी हो ना उस मोमेंट में. और बेस्ट रोमांस जो है वो बहुत छोटे मोमेंट्स हैं. एक पूरी कहानी में छोटे छोटे बारीक मोमेंट्स हैं जो उस रोमांस को बनाते हैं. गुजारिश में एक फोन कॉल का सीन है जो अभी मुझे लोग मिलते हैं आके कहते हैं दैट सीन. और वो बस अच्छा हो गया सीन. मतलब उस वक्त भी फील हुआ हाँ अच्छा था बट जब आया सब कुछ एडिट होके बन के आया इट जस्ट वाज मैजिकल. सो इट्स कभी भी वो उस मोमेंट में मैजिक ना होना आप फील ना करें तो शायद नहीं होगा. शायद कारमा है, करिश्मा है, कुछ गॉड गिवन है. बट दोनों का होना, दोनों का इट्स अ टू वे थिंग. वो रिसीव कर रही है, ये रिसीव कर रहा है, दे गिविंग, इट हैज टू दोनों के उसके बगैर नहीं हो सकता. एंड मैजिक आपको फील होना चाहिए थोड़ा सा उस होता है. होता है बिल्कुल बिल्कुल. यू हैव टू. सो व्हेन यू वर डूइंग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट विद यमुना did you know that this is going to be a really popular? There are a few scenes जो जहाज में हमने एक सीन किया था उसमें I certainly felt कि this is going to be fun. This is going to be because she's doing such a great job. Right. And seamless है. Seamless हो जाए ना कि आपको लग ही नहीं रहा आप एक्टिंग कर रहे हैं. वो फेंक रही है अपनी लाइन मैं समझ के वापस जवाब दे रहा हूँ. वो चीज आ जाए, वो चीज अचीव हो जाए, वो ऑडियंस को समझ आ जाती है. कैमरा अनफॉरगिव मतलब it doesn't forgive. तो वो चीज आप you can't fake it. फेक नजर आ जाता है तो थोड़ा सा genuine होना जरूरी है. You have to enter uncomfortable realms, territory. Absolutely. तो वो जरूरी है. But it worked. It worked so well. It worked so well. And I have to say, Yumna की वजह से, I mean, she's phenomenal. So अगर she is absolutely. We back and forth now. Right. So I mean, now that we're talking, can somebody please write a story? A really nice, like. I thought ये रहा दिल के बाद ही कोई लिख लेगा, समझ लेगा कि इतना. Waiting, we're still waiting. Waiting, yeah. Somebody please write a nice romance. Yeah. For Ahmed and Yumna. And Yumna. Yeah, absolutely. I'm waiting. So is she. No, good. Fingers crossed. It'll happen. We will manifest it. Exactly. We will manifest it. Bilkul sahi hai. Another thing that you really love doing, although you've not done it in any of your films, is dance. और फिर आप वैसे तो कैमरे पे आते नहीं हैं, other than your on-screen performances.
लेकिन हम फिर देखते हैं सोशल मीडिया खोलते हैं कि अहमद अली किसी ना किसी शादी पे नाच रहे हैं। अब वो भी जरा एमी सा कर रहा है नहीं कि नहीं, मतलब बड़ा हाफ हार्टेड दिल जान लगा के नाच रहे होते हैं, और मैंने आपको स्टेज पे नाचते हुए देखा हुआ है हाँ एज डैनी। मुझे अभी पता चला राइट बिफोर दिस वी या स्टार्टेड द इंटरव्यू। आई एम सो ग्लैड कि आपने वो देखा है। मुझे एक डिफरेंट कनेक्शन होती है जब भी कोई मेरा हाँ, पुराना काम देख रहा होता है ना, absolutely. एकदम से खुशी When you होती है। went for that audition, and Nida Bhatt is a slave driver, ऐसे तो नहीं उन्होंने काम कराया ना। हाँ सही, जरूरी है if you work with Nida, you know that बिल्कुल it's serious business. बिल्कुल। Did you know that you were going to become like big actor on television and film? Not at all. मैं कराची You were आया how था। old you were at that time? I was 28. And this was what year? 2013, 14. 14 का start I You think. looked much younger. And I just say you're saying 28. I thought you would have said 1920. 19 में मैंने अपना पहला हाँ, थिएटर किया था हाँ, इस्लामाबाद में with उस्मान खालिद। But right. उस्मान मुख्तार मेरे साथ पहला प्ले कर रहा ये था। आपका है ना, आप लोगों का पिंडी इस्लामाबाद बिल्कुल बॉयज का एक बिल्कुल। क्लब है। And हम इतनी खुशी होती है देख के कि सारे इतनी अच्छी जगहों पे Absolutely. पहुंच गए हैं and we're still such good friends. Yeah. But yeah, ग्रीस मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे ग्रीस मिलेगा। मैं कराची आया हुआ था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त उसामा काजी ने मुझे थिएटर के लिए बुलाया था क्योंकि सब आ रहे थे यहाँ। हमने सुना था क्योंकि हमजा अब्बासी भी वाज डूइंग थिएटर एंड वो आए कराची और उनका करियर एकदम से स्टार्ट हुआ। एंड हम सारे कह रहे ओ हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम करियर लेंगे इसको, तो ट्राई कर लेते हैं। आप कर क्या रहे थे? थिएटर हम एमबीए कर रहा, बीबीए एमबीए कर रहे थे। कर लिया एमबीए? हाँ बिल्कुल। बैंक में जॉब की कि नहीं उसके बाद? की कि नहीं की? मेरी अम्मी चाहती थी। Of course. But हर my माँ की dad ख्वाहिश saved है me. जी, बिल्कुल, कि बच्चे पे इन्वेस्ट किया है, एमबीए कराया है, तो कुछ पैसे भी कमा ले। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई अंडरस्टैंड कि उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बट हम थिएटर कर रहे थे, साथ साथ पढ़ाइयाँ कर रहे थे, कुछ नौकरियां कर रहे थे और थिएटर कर रहे थे, और खुद ही जाते थे कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन के पास जाते थे, कहते हैं हमें पैसे दे दें, हम थिएटर करना चाहते हैं। खुद ही लिख रहे होते थे, उस्मान लिख रहा होता था और बहुत ज्यादा डिफरेंट लोग लिख रहे होते थे, और हम खुद ही कोरियोग्राफी करके घरों में रिहर्सल, लिविंग रूम में रिहर्सल करके, एंड फिर हमने देखा कि कुछ, और हमने नहीं सोचा हुआ था कि हम एक्टर्स बनेंगे। मैं तो कंफ्यूज था एट द एज ऑफ 25 जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। आई वाज क्लूलेस। मैं एथलीट हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं अब कैसे मैं जाऊंगा एक डेस्क जॉब, कैसे मैं बैठ के करूंगा। मैंने ट्राई भी की थी दो महीने, एंड गॉड ब्लेस माय फादर, मेरे अब्बा ने मुझे कहा था ये छोड़ो नौकरी, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ये लो टिकट। बड़ी बात है यार ये। I think amazing, yeah, amazing. I mean, I'm so lucky, so blessed. Salam to those parents Yeah. who really let you follow your dream. उनको नजर आ गया था। मेरे अब्बा को बचपन में पता था कि ये या फनकार बनेगा या ये एथलीट बनेगा, तो एथलेटिक्स में तो इसको डालो अभी से। बाकी जब मैंने पहला गिटार उठाया, ही वाज लाइक गिटार नहीं छोड़ना। कौन बाप कहता है? कौन कहता है यार? जब मैंने थिएटर किया, ही वाज लाइक थिएटर नहीं छोड़ना। और एक मजे की बात, जब मैंने अपना पहला थिएटर प्ले किया, उन्होंने कहा एक बड़ा बेहतरीन थिएटर प्ले और फिल्म है ग्रीस, and I was 19. Really? वो करो। Really? मैं कहा अच्छा वो भी कर लेंगे। पाकिस्तान में ग्रीस कौन करेगा? हाँ कर लेंगे। मैंने दूसरा थिएटर प्ले किया, कहते हैं ग्रेट जबरदस्त। एक फिर से कहते हैं मुझे एक प्ले था, जॉन ट्रवोल्टा ने उसकी फिल्म की थी ग्रीस, वो करना। मैं कर लेंगे, ठीक है। अगर आया, and lo and behold, he manifested it. It happened. Yeah. And he came to watch it. Wow. And it was such a beautiful moment. Wow. So in 2012, एक और बहुत जबरदस्त moment था when we did with Usman, Khalid Butt, Salman Shahid, Umair Rana, Nadia Jamil. We went to Globe, London में जो शेक्सपियर का थिएटर हॉल है, वो एक बहुत जबरदस्त मोमेंट था। लेकिन जब खत्म हुआ, हमने शेक्सपियर किया, पूरा इंग्लैंड में टूर भी किया, उसके बाद I was like, I don't know what to do. Yeah. I want to try to act. इसने मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस दिया है। I came to Karachi. एक थिएटर प्ले किया, उसामा काजी ने मुझे लीड रोल, पहला लीड रोल था थिएटर प्ले का। I don't know, उसमें एक 1.5 पेज का एक मोनोलॉग था, फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस को। And I was like, I don't know if I'm cut out for this. Right. But I did it. I just was very like Parizad, I was very underconfident. And वो अच्छा हुआ। उसके साथ
एक मुझे वहीं से ड्रामा भी मिल गया, एक डायरेक्टर आए थे, उन्होंने मोहसिन तलत, उन्होंने देखा वो। फिर मुझे पता चला कि ग्रीस के ऑडिशंस हो रहे हैं और निदा भट्ट कर रही है, और 2007 में मैंने या 2008 में मैंने मैगजीन में देखा था निदा भट्ट ने शिकागो किया my था। God, what a production. I was like, this woman does live musicals. Yeah. And I want to sing and dance on stage. This is home for me. I want to work with her one day. And you have the American accent as well, which I'm going to ask you, where does that come from? पता नहीं, ये वालिद साहब थे, उन्होंने 70s अमेरिका में गुजारा है। ये किधर से आया? ये भी इस्लामाबाद बॉयज का थोड़ा सा एक्सेंट ये आई थिंक इस्लामाबादियों का इंटरनेशनल स्कूल में जाके, you know. नहीं, मैं सेंट मेरीज का अच्छा, okay. मैट्रिक एफएससी वाला बॉय हूँ। फिर किधर से? ये अब्बा मेरे वो हैं अमेरिका में 70s गुजारा, उन्होंने टेनिस प्लेयर थे, वो लेके आए थे। तो हाँ उन्होंने, और मैंने फिर सारा जो टीवी देखा है, जो ड्रामे, जो मैंने सारा कार्टून्स देखे हैं अमेरिकन, मेरे लिए ब्रिटिश इंग्लिश नहीं थी, मेरे लिए अमेरिकन इज द एक्सेंट। Yeah, and we adapt what we watch. Yeah. Absolutely. So when I heard कि ग्रीस हो रहा है, I was like, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं नहीं कर रहा ऑडिशन। रबिया चौधरी, a good friend, and another friend फैजान, they were like, जाके ऑडिशन तो कर लो। मैं जाके ऑडिशन किया, 3 दिन के ऑडिशन थे, मेरे घुंघरालू बड़े से बाल थे, दाढ़ी निकली हुई थी, और वहाँ और लोग भी थे, they were dressed as Danny Zuko। I was like, मुझे शायद कोई background singer का रोल मिल जाएगा, या one of the dancers. Did you think that you actually looked a bit like that? Not but at you all. do, right? There is this weird resemblance. Maybe. Yeah. I don't know. And a lot of people absolutely did say, did tell me. मैंने audition किया 3 दिन का, and they were like, you've gotten the lead role. I was like, what? सनम सईद है इसमें, आयशा उमर, मैं पिंडी का लड़का आया हूँ। I don't know. मैं घबरा गया। And how fabulous were they? They're amazing. Oh my God. Amazing. Yeah. Live singing, live dancing. And Sanam is just phenomenal. Aisha is great to work with. And so you threw yourself into the role. Threw myself into the role. It was the first time जब मैंने एक सही कहते हैं ना अपनी skin से निकल के एक और character को, because big shoes to fill. Yeah, man. Absolutely. Absolutely. And it went so well. So well. I was known as Zuko in Karachi. I think I watched it twice. It was so good. Even Chicago. But yeah, theatre का भी को अपना ही नशा है. बिल्कुल. And I believe, and I think it's also true, that actors who have done theatre just perform better. Because you know that 360 degrees performance that people are watching from every angle. It's not a 2-angle like a camera. Yeah, and it's उनको जरा break, to be able to break yourself. Yes. उसमें time लगता है. So process जो theatre में सीखता है ना वो और बड़ा मुश्किल है. Absolutely. बाकी mediums बड़े तेज हैं. Yeah. You know बड़े so theatre क्योंकि थोड़ा सा आपने rehearse करना है. Rehearsal बहुत जरूरी है. You have to leave your ego out of the room. You have to, the director आपको drill करता है, आपको reconstruct करता है, and that's a fun process. Right. If you can give yourself, if you trust the director. Right. And Nida Bhatt, phenomenal director. Yeah. बहुत मजा आया काम करने का. Absolutely. Strict, really strict. और मुझे अच्छा लगा कि वो strict है. हाँ नहीं जरूरत है हमारे लड़के लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है. बहुत So theatre भी किया, music भी किया, गाया भी, band भी था, television भी किया, film भी की. Emma, is it fulfilling to be an actor in Pakistan today? And when I say fulfilling, I mean like as in professionally. Is it spiritually fulfilling? Is it financially fulfilling? Can one get along just by being an actor? Because ड्रामे भी लगता है कि बहुत बन रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को बार-बार कास्ट किया जाता है, नए लोग कम ही नजर आते हैं. So is there fulfillment? Is there room for improvement? तो हमेशा होती है. But what is the need of the hour now? So it's अगर आप top tier में हो, तो you can make a good living. Right. But और अगर आप अभी A नहीं है, B हैं, तब भी आप decent पैसा बना रहे हैं. ज़्यादा काम करना पड़ेगा. So it pays better than a lot of jobs. मतलब मैं अगर कुछ और काम कर रहा होता किसी कंपनी में, मार्केटिंग मैंने MBA किया, अगर मैं लगा होता तो मैं शायद इतना ना कमा रहा होता जितना अभी कर रहा हूँ. But मेरे लिए आप कर भी एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि आप हर वक्त टीवी पे होते हैं. बिल्कुल. So मेरे लिए ये भी है कि मैं जरा सादा आदमी हूँ, तो मेरे लिए जरा इजी है
जो शादीशुदा लोग हैं इसका क्या मतलब है? सादा सादा आदमी को प्लीज डिफाइन करें कि मेरी बहुत ज्यादा जरूरी क्या आपकी अहमद जरूरियात हैं नहीं है इतनी कि ज्यादा फिर भी मेरी कुछ तो मेरी ट्रैवल के लिए मैं सेव करता हूँ ठीक मैं है अच्छा खाना पीना कोशिश करता हूँ राइट घर का खाना मेरी अम्मी का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है ठीक है मैं एथलेटिक्स में करता हूँ उसमें दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव कह रहे हैं एथलेटिक्स कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं आप अदर देन टेनिस टेनिस मैंने मेरा वर्ल्ड रैंकिंग भी रही है व्हेन आई वाज मुझे पता है टेनिस बहुत इट्स अ फैमिली स्पोर्ट क्रिकेट मैंने खेली बहुत ज्यादा माय फादर वांटेड मी टू बी अ Let's not क्रिकेटर even go there. Yeah. And talk about the current state of cricket बिल्कुल in बिल्कुल Pakistan. बिल्कुल मैं भी बेसिकली क्रिकेट इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैंने एक ट्रायल्स अटेंड कर लिए थे और मैंने वहाँ जब हालात देखे मैं शायद कुछ और कर लूँ मैं इतना रूथलेस नहीं हूँ इतना एम्बिशियस नहीं हूँ कि मैं इस पे फंसा रहा हूँ और लगा रहा हूँ फिर मैंने कॉलेज लेवल में स्विमिंग भी की है मैंने टेबल टेनिस भी खेली है मैंने फुटबॉल भी खेली हर चीज जो भी खेला अच्छा की बास्केटबॉल भी खेली आजकल गोल्फ खेल रहा हूँ Oh, nice, nice. गोल्फ इज माय न्यू Nice. लव आई लव इट इट्स सो मच फन Yeah. जो वो दिखती है वैसी है नहीं बहुत सिखाती है इंसान A को word of support for golf. Yeah, बिल्कुल। okay. The underdog of हाँ apologies to all professional golfers. हाँ. हम नहीं कभी समझ पाए कि इसमें हाँ, क्या थ्रिल है हाँ बिल्कुल बहुत अजीब लगती है हाँ. मैं एज यू नो एज एन आउटसाइडर मैं भी हाँ. देखता था लाइक मतलब पता नहीं गोल्फ गोल्फ कोर्स कभी पे खेलूंगा चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं कहीं एक But टक किया बॉल it को is फिर one से of the most satisfying sports Okay. I have Okay, I'll played. take your word for it. Yeah, because मैंने बहुत sports खेली हैं and golf is very satisfying. Um, and so yeah, swimming का बहुत शौक है. Um, and tennis तो हमेशा खेलता रहूँगा, cricket खेलता ये रहूँगा. साइड नहीं आपकी आप टेलीविजन पे हमें नजर आ रही बिल्कुल the one that loves to dance and is sporty and you know lively and music and हम बड़ी sober side देखते हैं तो obviously वो भी आप ही हैं बिल्कुल that is also a reflection of who you are and as you said in silence is salvation and you also stay very quiet on social media now of course as conversation for the sake of conversation how important is it for today's star bini actor artist to be active on social media कि आपकी आवाज लोग सुनते रहें how important is it for everybody to have an opinion to express that opinion because बड़ा pressure है कि ओ यू नो फॉर एग्जांपल अगर एक हरासमेंट का इशू लें तो ओ फलाने ने किसी को हरास किया है तो अब सबका फर्ज है कि या तो उसको डिनाउंस करे या उसको सपोर्ट करे but everybody has to have a say how much pressure is there you don't seem to be taking any of it yeah no pressure no pressure मुझे मेरे अपने जो करीबी हैं वो कहते रहते हैं एक्टिव हो जाओ देखिए फ्यूचर यही है फ्यूचर इज सोशल मीडिया एंड आप एक्टर हो या नहीं हो एक दो मैंने आपकी सोशल मीडिया कैंपेन्स भी देखी हैं जो आपने पोस्ट की हुई हैं you look visibly uncomfortable in those हाँ so I was like okay he's a good actor but obviously not so good that he can act this out terrible in real life terrible in real life I mean you are visibly uncomfortable doing them तो वो क्या है कहते हैं कि जी अब तो काम नहीं मिलता अगर आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं है बिल्कुल ये भी हो रहा है बिल्कुल वो एक representation है ऑफ आपकी फैन फॉलोइंग क्या है ना फैन फॉलोइंग क्या है नंबर मिल गया है बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल ये वो दौर है जहां आप असल में घबराते हैं सच बोलने से लेकिन कमेंट सेक्शन में आप वो बात भी कह देंगे जो छुपी हुई है आपके दिल में बिकॉज़ आप नजर नहीं आ रहे ना किसी को आप तो एक हैंडल वहां आप सब बोल देंगे लेकिन असल में आपसे नहीं बोला जाएगा सो ये एक बड़ा एक अजीब सा टाइम से हम गुजर रहे हैं इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम आई मीन और जहां तक आपने ओपिनियंस की बात की आई हैव वेरी स्ट्रांग ओपिनियंस ऑन थिंग्स या यू डू आई एम मतलब मेरी व्यूज भी स्ट्रांग है बट वो मैं अपने तक रखता हूँ क्योंकि चेंज हो सकते हैं ओवर टाइम यू नो आप गलत हो सकते हो किसी चीज पे और यही होता है आप देखें सोशल मीडिया पे दे टेक समथिंग फ्रॉम योर पास्ट एंड दे थिंक दिस इज हु यू आर नाउ बट यू चेंज ओवर टाइम इट्स अनफॉरगिविंग but that's not the reason why I'm not I like to keep my personal and private life separate my professional life just what I'm जो मेरा काम चल रहा है that should speak for itself and so far it's working right I might change it ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं करता मेरी list of priorities में नहीं है वो मेरी और बहुत ही चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ जिंदगी में और मैं असल जिंदगी को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ वर्चुअल जिंदगी को मैं वीडियो गेम्स तक एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ आई लव वीडियो गेम्स ये भी इस्लामाबाद बॉयज क्लब का एक हिस्सा है वीडियो गेम्स भी उनका बहुत जरूरी हिस्सा है so that's my version no but it's interesting because and I'll press you a bit more on this because
coming full circle back to Gunjal, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमने इसको इट्स बीन प्लेइंग आउट इन द न्यूज़पेपर्स लाइक कॉन्स्टेंटली, और स्पेशली पिछले 1-2 साल में इतने ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर एंड वायलेंस एसोसिएटेड विद चाइल्ड लेबर. यू नो दे हैव बीन रिजवाना का केस है, उससे पहले जैनब का केस था, यू नो, एंड 2 बच्चे उन्हें फ्रिज से कुछ निकाला तो यू नो दे बीटन really brutally. So it is so, मतलब दिल दहलाने वाली कहानियां हम अखबारों में पढ़ते हैं, मगर somebody like you, we don't hear you comment on it on your social media platforms, whether it's Twitter or you know, but then you'll make a film. So maybe this is your way. This is my way of speaking out, essentially. देखिए मैंने खुद ही सवाल पूछा, खुद ही मैंने जवाब दे दिया. Thank you. Great. But मेरा यही, I was coming to this. This is my way of speaking out on these matters, and I mean, ऐसा नहीं है. I would like to be more vocal. You're right. I should be more vocal. I should speak about. I mean, एक वही Uncle Ben वाली बात है. With great power comes great responsibility. We love that line. Yeah. And it's so true. मुझे करना चाहिए चीजों के बारे में, आवाज उठानी चाहिए. Is there a lot at stake if you do become vocal, or for example if you have a political affiliation? Is there? मैं उसकी वजह से बिल्कुल नहीं है. It's my own personal reasons. Right. But होता है लोगों को. Yeah. वही बात है कि आप आवाज उठाते हैं कुछ चीजों के बारे में, and you don't know कि उसका आउटकम क्या हो सकता है. But one should be fearless. ये हमारे पास platforms हैं to talk about justice, talk about truth. But it's so hard to understand what truth is these days. It's Absolutely. Pollution of information, of noise. So I like to, मैं अपने तौर पे research करना शुरू कर देता हूँ चीज़ों के बारे में, and try to gain as much knowledge. And उसमें इतनी चीज़ें खुलती हैं कि I'm like, which truth do I post? There's so many different versions of it. So I want to be informed. So that's my way of tackling these things. I personally want to be informed. And if anything, I would want to use my social media to understand perspectives. Right. क्योंकि मेरी personality ऐसी है, मेरा शुक्र है, मेरा profession ऐसा है कि मैं लोगों के different shoes में घुस के उनकी perspectives इस दुनिया देखता हूँ. It teaches me a lot about myself, about the world, about mindsets of different people. So what is Gunjal going to teach people? Because एक obvious कहानी तो है, of course, इकबाल मसीह की कहानी है जो कि relive की जाएगी, but of course there's a spotlight on minority treatment as well, और वो भी बहुत relevant है आजकल. हर हमारे तो unfortunately पाकिस्तान में ये चीजें consistently relevant हैं. मगर इसके अलावा if you were to like sell the film in a small conversation, what would you say? Why should people watch? बहुत सी अच्छी चीजें हैं, you know, इसमें बेहतरीन कास्ट है और आप लोगों को बिल्कुल नए एवटार्स में देखेंगे. इसकी बहुत अच्छी कहानी है और कहानी किस तरह खुलती है वो बहुत अच्छा है. इसके डायलॉग्स अच्छे हैं, इसमें एंटरटेनिंग है. It is entertaining, and the music जो है इसका बड़ा गाने हैं बिल्कुल. इसमें गाने हैं. हमने कोशिश की है कि it's a marriage of everything, जैसे आप कह रही थी. क्योंकि मैं अक्सर क्रिटिक फैंस तो सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं, उनके ओपिनियंस होते हैं. तो अक्सर फैंस कहते हैं कि आप हीरोज पे फिल्म बनाएं, आप मैसेज बेस्ड फिल्म बनाएं, आप एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं. तो उनका व्हाई नॉट, सारी चीजें इकट्ठी करें. तो इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इसमें आपके माजी का भी एक फैक्ट्स है, आपको पता चलेगा, हिस्ट्री पता चलेगी किस चीज के बारे में. एक ऐसे हीरो के बारे में जिसके बारे में अब नहीं बात की जाती, उनको वापस रेलेवेंट करेंगे क्योंकि जिस इश्यू पे उन्होंने आवाज उठाई थी वो बहुत रेलेवेंट है. तो सब कुछ का मैरिज है, तो इसीलिए लोग पीपल विल एंजॉय इट. अच्छी फिल्म है, पाकिस्तान की एक बेहतरीन फिल्म है जो निकली, और मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. Very, very proud. It looks like a film that you would be proud of. Like, you know, it looks like a serious, well-intended and well delivered, executed film. बिल्कुल. Shoaib Sultan has done a phenomenal job. उनकी पहली feature film है, और he's a meticulous man. I've taken inspiration from him. उनकी जो जितने organized वो हैं, मैंने किसी को नहीं देखा. मैं उनसे thoroughly impress हूँ. जी बिल्कुल. और मैं उनसे अभी भी इंस्पायर होता हूँ कि वो जितना जबरदस्त काम करते हैं, जितने ईमानदारी से करते हैं,
जितने हार्ड वर्क से करते हैं, बड़ा ही बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत इम्प्रेसिव है। Absolutely. Yeah. No, looking forward to Gunjal. Absolutely. We'll see you. Hopefully, I don't know premiere वगैरह का क्या scene है. This screening There शायद is a हो, screening yeah, होगी, so hopefully we'll see you at the screening. जरूर। और उसके अलावा हम manifest कर रहे हैं कि कोई एक बहुत ही अच्छा सा romance लिखे आपके और बिल्कुल। यमुना के लिए, और हम manifest कर रहे हैं कि कोई एक musical भी लिख दे तो कोई बुरा नहीं है, मैं जिसमें डांस आप करना हाँ चाहता आप हूँ, डांस कर, हम बिल्कुल आपको मैं नाच देखना चाहते हैं नाचते हुए, बिल्कुल मैं करना अदर चाहता देन हूँ। किसी की शादी पे जो आप ऐसा हर इस्लामाबाद की शादी पे माशाल्लाह आपने अब डांस किया हुआ छोटा सा है। इस्लामाबाद है। जी छोटा सा इस्लामाबाद है, छोटा सा आप लोगों का एक ग्रुप है ग्रुप जिसमें है। किसी न किसी की कोई शादी हो रही होती है, बिल्कुल, तो उस पे आपको डांस करते हुए हम देखते रहते हैं। लेकिन यही जो एनर्जी है, जो आपके शौक हैं, उनको वी वुड लाइक टू सी देम ऑन स्क्रीन एज वेल, यू नो। I Yeah, mean, me too. we absolutely adored and loved Parizad, but we also Thank want you. to see, you know, a bit of maybe a bit of Zaki coming back. I don't know. Bit of Zaki. हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आई मीन बल्कि कोई बिल्कुल नया नई कैरेक्टर चीज, लिखे, नया हाँ कैरेक्टर। absolutely. मैं रोमांस करना चाहता हूँ स्क्रीन पे, इस बहुत मजा आता है, इट्स हाँ यू नो एक डिफरेंट जॉनर। बहुत रोमांस में दो लोगों की ट्रूली एक्टिंग टेस्ट होता है, यू नो, कोई really जैसे दो लोगों की केमिस्ट्री, वही वाली बात, chemistry, हाँ वो कैसे मैजिक क्रिएट करेंगे आप किसी के साथ, उसका एक बहुत मजा है। रिहर्सल्स में मजा आता है, फिर उसकी राइटिंग में भी है थोड़ा सा, बट ये एक वन ऑफ दोस थिंग्स, वन ऑफ दोस जॉनर्स जो थ्री डायमेंशनल है। आप निकल के Absolutely. आएंगे, देखेंगे, करेंगे तो पता चलेगा, करेंगे ये तो ना पता एक चलेगा। डायरेक्टर कहेगा करके दिखाएं तो मैं बताऊंगा कि ये कुछ बात बन रही है कि नहीं। कि नहीं बन रही, yeah, बिल्कुल yeah, ठीक है। It was a pleasure talking to you, Ahmed, of likewise, course, and long overdue. yeah, I'm But sorry I'm about glad. that. No, it's fine. It's fine. I really respect that actually. And Thank you you. know, to go back to Parizad, I don't know कि वो consistently आपका skin dark रहती थी या वो makeup रोज होता था, रोज होता था, रोज होता था. But you know, you said that you're in character and you don't want to meet people while you're in character, कि वो बिल्कुल, लोगों का viewing experience खराब हो जाएगा. and तो it took a ये toll on me. Parizad took a toll on me. really, Yeah. It was heavy in yeah, physical means as well as emotional, as well as spiritual. It was metaphysical for me. जैसे जैसे परिजाद मशहूर हो रहा था, मैं मशहूर हो रहा था, क्योंकि शूट साथ साथ चल रही थी, तो बड़ा एक सरियल सा एक्सपीरियंस था। I think Yeah. लोगों के लिए भी ऐसा ही था। और उसके लिए ईमानदारी से जस्टिस करने के लिए मुझे उसको पूरा टाइम देना बहुत जरूरी था। Right. मैं चाहता था कि वो काम खुद ही अपने लिए बोले, अपने लिए बोले, बिल्कुल, एंड वही हुआ। और इंशाल्लाह गुंजल में भी ऐसे ही होगा, इंशाल्लाह। एंड गुंजल के बाद we hope to see you back on television. Absolutely. Are you looking at scripts? बिल्कुल, Have you signed anything yet? बातचीत चल रही है, बहुत चल रही अच्छी है, एक स्टोरी है, आई ठीक है, एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उस स्टोरी का एक हिस्सा मैं हूँ और बहुत से लोग हैं हिस्सा है, तो nice. उम्मीद है कि अच्छा निकलेगा। अच्छा निकलेगा। बस जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपके नाम के साथ जो एक मेरिट एसोसिएट हो गया है, तो उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा हैं, उन पे पूरे उतरते रहिएगा। मैं प्रेशर नहीं लेता दो इस चीज का। लग रहा है कि आप नहीं लेते प्रेशर। but thank you, Emma. It was delightful talking to you, and good luck with Gunjal and all future projects, and keep doing the good work. Thank you very much. Lovely talking to you. Absolutely.